Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Fine, thank you. Okay, so let's begin it as a formally first class. Okay, and last class as in formal manner, but at the same time, I'll just decode here how we are going to move further from this particular session. Okay, so my purpose is that I'm giving you enough time to read certain things. Okay, that you will be reading things on your own. And at the same time, suppose if there is something that you are unable to crack it on your own, okay, anything that you are unable to crack it on your own, say a particular concept, even you after watching on the YouTube or the concerned teacher lectures available anywhere, okay, and still that you are struggling with it, you can come back to me. You just shoot me your doubts, okay. So what I used to do, I used to collect the doubts. Okay, in one of the mentorship session itself, I just deliver the doubts. Means this is not something that planned lecture or something. But suppose we are doing the ethics, some of you are having issue ethics management or whatever it is. Okay, that we will take care in the mentorship sessions itself. So for me, mentorship session is not only about being into the Gyanbazi mode. I will deal with it academically as well. And obviously, on certain occasions, it might be a case that you ask something and but that concept is not that light, I will say. Okay, that I will read on my own. Believe me, after having 10, 12 years of experience, aspirant educator mentor and all, I can read better than you and understand earlier than yours, I will say. Not questioning your, I say, human, but counting on my experience, that's all I will say. Okay, so whatever doubts you are having, you just note it down for the time. Okay, and do let me know in the inbox as well. Okay, sir, this is my doubt. In the next session, if possible, do deal it. If I will find that doubt is of trivial nature, to be very honest, I will directly say yaar ye youtube kar lo, ho jayega. Vanna in the session, what my philosophy is that I ask yourself what you understand from the same. Okay, it might be the case that you are struggling at a particular juncture. ठीक है, वो सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट. ठीक है, तो it's a more like to keep thing in the pace rather than halting for the certain concept and all. Okay, second, like what I feel, that's why I did not this year, I did not entertain any student who is literally struggling with the foundation itself. Okay, it's fine, Tushar, it's fine. Okay, so literally we are in the situation where I'll say ki I will give you enough time to read, and then we will do the answer writing practice. This is the only reason I refuse this year to entertain any freshie. Freshie means who's quite weak. Because earlier I know that I entertained some of you and let you join the batch, but this time I'm starting the same batch in the say August, or say I will pace up in the September. To be very honest, okay, the pace then I am willing to provide it will in the September on. I cannot say itself that it will be the August. You know that I'm still struggling with my notice period. That's all I can say. Okay, so that's why I refuse to entertain. And if some of you even I question those who are very weak with the foundation and all. Okay, so this is it. Now from September itself, I'll start answer writing as well. This year, I'm planning answer writing on the regular basis. So what am I planning? Just to let you know for the time being, before I begin in this session, I will equip you all the, I'll say, skills that are required for the answer writing before September itself, like within the August. Okay, whatever 3, 4 sessions I have to take. But at the same time, what I want from the September, I'm going into the, I will say, some answer writing sessions. Okay, और से आंसर राइटिंग मेंटरशिप सेशंस आई विल कॉल इट मोस्ट लाइकली. ओके, शॉर्ट फॉर्म में ऑसम अच्छा लग रहा था पढ़ते हुए कल, तो इसीलिए लिख दिया. ठीक है, so what I'm supposed to do in those sessions, so it's like I will be having 3 or 4 sessions. I have to just decide whatever it is. Okay, either I will go like first 2 questions I will help you to write, next 2 questions it's on your own. First 2 questions, next 2 questions, it's like next 2 questions I want you to write on your own, get it evaluated as well. Okay, initial days you will not get the marks, but you will get the reviews. Okay, then again, as I say,
It might be a case in some of the sessions I tell each and every question. In some session, I will not discuss even a single question. It will be like you write on your own. So I will just move the sessions according to one's need. Okay. But at the same time, I will certainly discuss the approaches of each and every question. Okay. Maybe in some last session or something. So it's like if in your week writing 10-15 questions, suppose 10-15 questions somewhere. Okay. So at least seven it will be discussed. Approaches. I will not say that I will discuss each and every point, but approaches, how to decipher it. Okay. So my purpose of mentorship is not leaving you on your own. Even not like that I'm going to do spoon feeding. Okay. So from my side will be nudge. Okay. Every time that you can move faster. This is what I have planned. Okay. So the schedule and all, whatever you see in the answer writing program or anything you let's see on the Telegram channel itself, don't you think you need not to purchase any other course? It's included in the curiosity itself. Okay. So बिना मतलब के मेरा दिमाग मत खराब करना, मतलब खाना मत, बेसिकली खराब क्या करोगे? ठीक है, तो इट विल बी इंक्लूडेड ऑनली देयर. ठीक है, सॉर्टेड है. So this is how I'm planning this year. Now coming back to two things what I have planned. Ethics, you guys might be done with the ethics say next 4-5 days. Okay, 5-7 days. Ethics one reading will be there. September starting itself, we are going to have our enrichment classes. Ethics is something that I do teach as well. Okay, so at least I will say uh, 2 or 3 classes for the theory section, similar number of classes, 3 or 4 for the case study section. I take like 6-7. It's not the course, but enrichment classes you can make it equal to any other famous teacher available in the market. That's all I can say. Okay, my I'll say way of teaching ethics is more on the practical side where you can entertain the answer. Okay, those 6-7 sessions we will be having in the first session. Again, it might be a case that whatever is being made available to you, it will be launched separately as a module as well. Okay, so you need not to purchase any course within this means period. Okay, whatever is coming, do not worry. Whatever it is coming, it is included in your course. So as I said, I am bad with the making PDF and all. Okay, that's why like I'm clearing it in the videos. Okay, sorted. Then what next? What I'll suggesting you that be in the mode of the reading itself. I know that ethics is not that easy. Okay, so once the sessions are done, so I'm planning somewhere 15th onwards answer writing. But before, not 15th, sorry, 10th onwards. Okay, so it's like answer writing. Fair enough, you got my point, what I want? Okay, so it will be the answer writing wala side. Now, when I start answer writing from my side, what I promise you that it will be evaluated as well as it will be hand holding side. Okay, so I can guarantee that there will be a difference between first and last answer. Even if someone is writing good answers right now, I will say they will be writing best answers by the time I end up this course. Okay, so my goal is pretty much clear. Paper 4 ke baad either I will be taking paper 2 or 3. Now, as some of you say that customize targets and all, to be very honest, one thing I'm opening up here right now. Whosoever has read well before, okay, if you are waiting for my targets, it's fine. I will give. Certainly, I have to. That's what you are being, I'll say, said, or I will say, promised. But main 65, quality, economy, IR, science and technology, environment. Main 65, these 5 magazines, you can start on your own. It might be a case that when I give the target, you can have something new from my side. Bluntly being honest. Okay, I will be including these things in my targets. Okay, certain help will be there from my side as well. But if someone is, I will say, struggling or say doing good, so and waiting for my replies, sir, क्या करना है? आंख बंद करो, ये 5 मैगजीन खत्म कर लेना. मेंस के टाइम पे आ चुकी है. Clear? Sorted? Fine. So now the first session of answer writing, I'll start with the introduction. As I said, it will be a short session. Then I will be having your doubts and whatever you guys are having. Okay.
how to write introductions. I got three questions of the ethics since you have read ethics only for the time being. Okay, so I got three questions of the ethics. You will be writing your introductions. Everyone will try at least two introductions, and you will be sending it to me. Okay, so fair enough. Second thing, once the introduction part is done, now we are going to have our another session within 2 or 3 days. I'll just acha, one more thing. By the time I give you a proper schedule, answer writing wala schedule fix hoga. Other sessions, it will be like most likely you will get notified within 24-48 hours only. So okay, that I will say have some leniency with me. Okay, that's how I plan my things. Okay, so next session we will be having within the next 2-3 days, most likely somewhere 9 p.m. because still notice period is there. That's why we are having the session at 9:30 or 9 p.m. we will be having. But note down your homework before coming to the next session. There are n number of commands in the UPSC. Commands means illustrate, elucidate, comment, discuss, elaborate, critically examine, analyze, critically analyze, visualize, substantiate with suitable examples, whatever it is. I just want you guys to note it down on one. You will get it from my side as well, but I want थोड़ा सा ना इसी बहाने क्वेश्चन देखोगे. It's a 30-minute exercise for everyone. Okay, so you just go to these commands and whichever command you find uncomfortable, you let me know. ठीक है? So second session will be about this only. Okay, so I'm just sharing the screen. ठीक है? So we will start now. I hope my screen is visible. Correct? Is it visible now? Yes, sir. Yeah. Thank you, Sakshi. Okay, so how am I going to do it? Yeah, I have turned on the recording now. Yes. My purpose is that you will be guided well before you start writing answers. So you would have read content based on the timeline or deadline format from my side. Okay, so I promise you that this deadline will be posted timely. Don't you worry about it. But at the same time, if someone completes anything before the deadline, you have two options. Right now, I have given you options to go for the mains 365, or you can ask me the next target. I will be expecting you to go this way. Reason for the same, this will help you to understand the interlinkages. And once we start our thorough answer writing program, within this program, I will say, you guys will understand these things in better manner. You will be able to write these things in your examples, answers. Okay, so I will say this can be read without any second thought. And polity, economy takes more time than any other. Then environment, then science center, then IR. You should be focusing there on. Apart from it, whatever CA we have to do, though I have a bad handwriting, I believe so, but it's still readable. Okay, certain things I keep on sharing on my channel. You guys obviously should, I'll say, see at least once those PDFs. I do not share on the regular basis, but whenever I share, means now the newspaper had certain content that needs to be shared. Okay, so you can follow the same. Just have a look. Apart from it, I will be having one session of the how to do newspaper. What is about the answer writing through newspaper, or language competency, or how to utilize newspaper for the notes making. Okay,
So one session on this, it will be there. So this proper, I will say, month of the August, we will be focusing on the equipping our site. By the time your targets will be going on. So from September onwards, I will be little strict from my side. I'm making it quite clear. ठीक है चलो. So how to start answer writing? Basically, I will follow this year this approach. First session we are having today. So we will focus on the introductions. Okay, then we will move towards the commands. I've already given you the required homework. Then my focus will be on decoding the question. Okay, decoding मतलब क्वेश्चन को समझना कैसे है. What approaches we can follow so that we do not deviate from the demand of the question. Next, we will be working upon the conclusion wala side. Okay, it can be that these two sessions will be merged. Last session, it will be about the body. Okay, when I say body, I basically means parts, subparts, and flip side. This is the overview. These 4-5 sessions I will be conducting before I go for any kind of answer writing sessions. So when I say answer writing sessions, mentorship. Okay, it means I will not just say what to write, how to write. I will teach you at very basics level. Okay, this is what I will say. Here, evaluation is there, no doubt over it, but I will review the evaluations periodically so that you can improve. So all of you will be getting some calls from my side, or it might be a case some other mentor will come as well. I will be there as well. No need to be worried about it. Okay, so you will be having the calls. Basically, sometimes I will say good introduction. What was good in that? Maybe it cannot be explained. I will say poorly arranged. So how to prioritize the things? So these things will be working upon. So I hope now you are getting the structure how we are going to move forward from here on. ठीक है चलो तो फर्स्ट थिंग वन बाय वन सिंपल है ठीक है दिस इज योर इंट्रोडक्शन लेट्स फोकस ऑन दीज 4 categories only for that. Whatever introduction you have to write, is there any keyword which is not that defined within the questions? ठीक है ऐसा कोई कीवर्ड है जो आपके क्वेश्चंस में डिफाइन नहीं. You have to define. Now, writing introduction, first mistake people do, ये 4-5 लाइन में लिख देंगे. Now you will say toppers भी लिखते हैं, हमने देखा सर 4-5 लाइन में. I will say yes, they do write. But have you seen their font? So if your font is large, certainly it can go 4-5 lines. But वो टॉपर बन गया इसका मतलब उसकी किस्मत भी अच्छी. Simple. ठीक है. Now if you are giving more space to the introduction only, so I say sometimes one more thing about the introduction. A good introduction may not necessarily fetch you marks, but a bad introduction will certainly make your marks negative. That's why I want my introductions to be crisp enough. Sorted? My purpose is that it should be somewhere 3 line. If it goes in the 4th, it's fine, but try to limit if 5th line mein na jaye. Clear? This should be clear about the introduction. Now, if the keyword is not defined or some jargon is used, for example, constitutional morality, jargon hai, it needs explanation. ठीक है? So you use define keyword wala approach. You can come up and define the keyword. Now, what if multiple keywords are there? What if multiple keywords are there? कुछ नहीं करना अभिषेक अपने को मल्टीपल कीवर्ड्स में एंश्योर करना है कि
things become interlinked. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक क्वेश्चन आ गया कोई जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखा है, ट्रांसपेरेंसी भी लिखा है, 3 कीवर्ड्स हैं. ट्राई टू ब्रिंग, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है ये लिखना. गुड गवर्नेंस विद इन योर इंट्रोडक्शन. Now in good governance you guys can find it na ki every word can be utilized. That's what I said when I said interlinkages and all. ठीक है. ज्यादा नोट करने के चक्कर में मत पड़ो, रनिंग नोट्स बना लो, पहले समझने के इस अप्रोच से बाहर आ जाओ आप लोग. कैमरे देख रहा हूँ मैं, स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन इसीलिए मुझे दिख रहे हैं अभी शक्ल में. ठीक है, मतलब आई विल से इट्स नॉट अबाउट राइटिंग नोट्स. नोट्स लिख लेना, फाउंडेशन कोर्स सबने किया होगा ना ऑलमोस्ट, यहाँ पे होंगे ना नोट्स एक थैली भर के. नोट्स के पीछे मत भागो, समझने की कोशिश करो. एक बार समझ में आ जाएगा, थिंग्स विल बी इजी फ्रॉम योर साइड. ठीक है, तो मल्टीपल कीवर्ड्स, यू गो फॉर द इंटरलिंकेजेस. 4 वर्ड लिखे यार, सारी चीज पीपीटी में नहीं होती. ठीक है, आलसी आदमी हूं मैं, इतना लिखने बैठूंगा तो मैं खुद एक बुक छाप दूंगा. अपनी बेचने वाली पीडीएफ में बना नहीं पा रहा, तुम मतलब यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो. ठीक है, चलो. recent event. So what is the recent event? Either it should be your current affairs list, or what else if not the current affairs? What is the recent event? Any important watershed moment. Now one important question can be from your side, sir, what is the I will say timeline for the recent one, है ना? तो anything in last 3-5 years is recent, don't worry. अगर तुमको याद आ रहा है स्टार्टअप इंडिया तो वो उससे स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, मींस रेलेवेंसी पे ध्यान देना. रिसेंट इवेंट्स मींस आप वाटरशेड मोमेंट पे चले जाओ या करंट अफेयर्स पे चले जाओ. इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले आपको बता दिया. सॉर्टेड. चलो, नेक्स्ट द कंटेक्स्ट. It is, I will say, best if you follow the same. Why the best? Simple. It gives you the idea why question is being asked. ये मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को कम समझ में आएगा, तो वी विल प्रैक्टिस इन द क्वेश्चंस. आज मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को. फर्स्ट सेशन सबका जनरल रहेगा. हम इंट्रोडक्शन, बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पेपर स्पेसिफिक भी फॉलो करेंगे. मतलब देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच. अभी एक जनरल अप्रोच चल रहा हूं मैं आपको. व्हेनेवर वी विल स्टार्ट आवर आंसर राइटिंग, ठीक है, मैं उससे पहले एक जनरल बता रहा हूँ, फिर पेपर स्पेसिफिक भी हम अलग अलग चीजें सोच सकते हैं. उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब 15 मिनट में आंसर राइटिंग के सेशन के साथ साथ हो जाएगा. सपोज अगर हम डेली 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक दिन 2 ही क्वेश्चन कर लेंगे, स्टार्टिंग में 15-20 मिनट में वो बता देंगे. एंड आई विल ट्राई टू कीप सेशन शॉर्ट. चाहे मल्टीपल रख लें, 1 घंटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और फोकस रहे. बेसिकली आई डोंट वांट कि मैं 3 घंटे की क्लास ले लूं और तुम दिन भर मुझे गाली दो कि कुछ पढ़ नहीं पाए. ठीक है, इट्स बेटर टू हैव 1 hour. And I will try to keep it in the evening only because I got some of the messages from the working aspirant that it might suit them. Okay, चलो. So context अभी मैं समझा दूंगा. अभी बस ये है कि why the question is being asked. The day you are able to understand the same, mark my words, you are on already right track. मतलब तुम्हें फिर कुछ करना ही नहीं है. Now this is fact data. You can come up with the UN report, you can come with the committee commission, you can come with the certain data, economic survey, whatever it is. This can be, I will say, utilized. Suppose we are talking about the women empowerment. We can say India cannot, to achieve full potential, India should be
यूटिलाइजिंग 50% ऑफ वुमेन, ठीक है, और 50% ऑफ द इट्स वर्कफोर्स। फिर ब्रैकेट में लिख के छोड़ दो लेबर फॉर पार्टिसिपेशन वुमेन इतना, समझ रहे हो? तो ये बोलते सरकास्टिक स्टाफ बट पॉजिटिव लाइन पे, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू, आई विल से टेक केयर। सो द थिंग्स दैट यू हैव टू take care or keep in mind. First, I already told you it try to limit in 2-3 lines. Second, my students never write introductions in negative tone. Never. जैसे अभी मैंने बोल दिया था बीच में गलती से, एंड आई चेंज माइंड, इंडिया कैन नॉट बी डेवलप, नेगेटिव टोन था, बोलना नहीं चाहता था, बस मुंह से निकल गया, फिर मुझे याद आया कि हाँ ये भी बताना चाहिए, यहीं से कर, ठीक है। तो वी विल नॉट यूटिलाइज नेगेटिव टोन्स इन आवर, नेवर। अभी नहीं समझ में आएगा, व्हेन वी विल डिस्कस फ्लो ना, it disturbs the flow of your answer if you start on the negative side. Fair enough? I'll say chalo, so we are moving to the questions, ठीक है, previous year questions of the ethics, the topics that you have already read, ठीक है। Now what is meant by crisis of conscience, how does it manifest itself in the public domain? Fair enough? Though no need to go about the answer, no need to know about anything, I am not concerned. I just want you guys to write what should be into the introduction. ठीक है, everyone write on your paper. ठीक है, so I'm giving you, it's 29:40. Okay, so 2 minutes. I want you to write at least 2 introductions. चलो 3 मिनट दिए, 2 introductions of the same questions. इस पेज की पीडीएफ आएगी मेरे पास, तो सोच समझ के लिखो आराम से। चलो स्टार्ट। हेलो सर, ये केवल कॉन्साइंस वाले का लिखना है या नेक्स्ट वाले का भी लिखना सिर्फ है? अभी सिर्फ एक ही बोला, 2 इंट्रोडक्शन लिखने को बोले हैं ब्रो। अच्छा, एक ही के दो। हाँ, एक ही के 2 बोले।
चलो, टाइम इज अप. ठीक है. So I hope all of you have read or written as well. Now, question before I move to the second. Okay. The reason why I did not ask you to write the second question is, how many of you, just hand raise will work? Okay. How many of you, Ray, I will say, wrote about the definition of the crisis of conscience in the introduction? Most of you, huh? No. Okay. So how many of you were able to utilize the crisis of conscience and public domain within the same line? This is what I was talking about. If you look at the question, what is meant by the crisis of conscience? It is the part. So you should have addressed it as a defined. How does it manifest itself in the public domain? Don't you think crisis of conscience in public domain can be interlinked in some example? For example, if some of you have just wrote the, I'm not asking what definitions you wrote or what not, it's fine for the time. ठीक है. अभी I will be having a look. इस बहाने मुझे तुम्हारा थोड़ा सोचने समझने की शक्ति पता चलती रहेगी. ठीक है. Crisis of conscience, it is fine thing to do. How does it manifest itself in the public domain? वो पब्लिक डोमेन में कैसे दिखती है? यही है ना क्वेश्चन. गेटिंग? If you can say in any example where we have been indecisiveness, we have shown indecisiveness. Yes, Prashun, what do you want to speak? सर मतलब एक एग्जांपल आया था वो, सर वो एग्जांपल आया है एक. बोल तो सही आगे. Yes, सर. सर एक आईएएस थे पंकज दीक्षित, उनके ऊपर काफी मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी. उन्होंने एक्चुअली कास्टिस्ट मतलब कुछ बातें कह दी थी, स्लर्स कह दी, जो कि मीडिया में काफी मतलब फेमस हुआ So था. you started with a negative tone. Simple. That's what I said. We Yes, don't have to use in the starting itself. This is the first mistake we do. Crisis of conscience is a negative thing, and when we write about it, our answer becomes negative. So introduction, I will say avoid. ठीक है सर. Okay. ओके. So here you can limit to the, I'll say, define on. If you have to show, you can show how it was quite visible in the public domain. Negative को negative काटता है, कुत्ते को कुत्ता काटता है. You talk about the hijack and all. How during the Kandahar hijack we were not able to take the military action. Crisis of conscience was there. So whenever you think of negative, think of negative. Now bureaucracy is something positive for you. ऐसे थोड़ी बनना है तुम लोगों को. And you are bringing again a positive example, which should have been positive, negative. Again, it becomes negative. So show where crisis of conscience, we are on the receiving end. Hijack. समझ में आया मैं क्या mention करना चाह रहा था? If you have to even mention the public domain wala issue, you could have mentioned like this. One, people have mentioned policy paralysis from the government side and all. Fair enough, you got the point why I choose this question. It's not like, see, I came up with the 3 questions just like that, गया copy paste करके आया. मेरे को सोच के आना पड़ता है. ठीक है. So that's what I say. चलो, moving to the next side. Hatred is destructive of a person's wisdom, conscience. Okay. That can poison a nation's spirit. That can poison nation's spirit. Okay. Do you agree with this view? Justify your answer. Yes. Go and write introduction, at least one. You got 2 minutes from now. 37 it is.
चलो डन. Now the question, if you see from the ethics side, I will be discussing all this, don't you worry. जब कंटेंट एनरिचमेंट में लूंगा मैं 7 8 सेशन, तो एथिक्स में मैं बता रहा हूँ तुम लोगों का पूरा सॉर्टेड करवा दूंगा एथिक्स और एससे. ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू गेट इट इवेल्युएटेड और फर्दर, तो इट विल बी अरेंज्ड, डोंट यू वरी. अगर किसी को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी. नाउ if you look at the question, it hated, wisdom, conscience, nation's spirit, and number of keywords. All are the ethical words. है ना? I will just ask if anyone can guess the context of the question. ये question पूछा क्यों जा रहा है? क्या चीज दिखाना चाहता है? कैन आई Shoot. अभी जो मतलब डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में जो मतलब कम्युनल राइट्स हो रहे हैं या फिर डिवीजन पॉलिटिक्स हो रहा है रिलीजन के नाम पे, उस कंटेक्स्ट में शायद. बहुत नेगेटिव एग्जांपल तुमने स्टार्टिंग में रख लिया, मैं तो बात ही नहीं करूंगा इस टॉपिक पे. पुटअप कैसे करोगे ये बताओ मुझको, अगर इसको पॉजिटिवली कहीं पुटअप कर सकते हो. इसको अदर वे डाउन ऐसे कर सकते हैं कि मतलब नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथ करने के लिए हमें कम्युनल हेट्रेड को और जो कंसाइन और विजडम उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत जो मतलब स्टेट वेट शेड्यूल वेट में. अभी आंसर नहीं डिस्कस कर रहा मैं, डोंट वरी. ठीक है, मैं समझ गया. यस, एनीवन, नंदिनी, यू वांट टू ट्राई? सर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो नॉर्थ ईस्ट में है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अपना सर, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्रा में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो सारी चीजें हैं. और सर इसको अगर ऐसे स्टार्ट करें जैसे कि मतलब अगर कोई एंशियंट टेक्स्ट का एग्जांपल आ रहा है तो वहां से अगर स्टार्ट करें तो चलेगा. डबल थम्स अप, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू मेंशन. शी हैज ऑलरेडी सर कंक्लूडेड. जैसे मैंने इसमें सॉरी हाँ बोलो 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 बोलो. सर, वो मैंने महाभारत का शकुनी का हेटेड था टुवर्ड्स पांडव. Good, 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 good. Fine. So this is what I was talking about as a context. ठीक है. So you can start with even the Nazi Germany. So the thing that has already happened and you got your own learnings from it, that can be mentioned. But when you question the India's existing social fabric, I'll not allow it. ठीक है. तो अभी इंट्रोडक्शन में क्या पॉजिटिव टोन, नेगेटिव टोन, कंटेक्स्ट, आई गेस थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को. ठीक है, क्योंकि सी इफ यू गो फ्रॉम द डिफाइंड कीवर्ड, बहुत इजी है, हर कॉपी में दिख जाएगा. रिसेंट इवेंट करंट अफेयर्स में होगा तो दिख जाएगा कुछ ना कुछ. अभी साइंस एंड टेक में कोई सैटेलाइट का पूछ लिया, अब तुम बोल दोगे. ठीक है. कंटेक्स्ट इज समथिंग दैट आई से इफ यू आर एबल टू गेट इट, यू विल सेट द टोन ऑफ द आंसर राइट. फैक्ट डेटा जितना याद होगा वो भर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं. एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ गया, हम भर देंगे कि 44%, 55%, व्हाटएवर इट इज. गेटिंग इट? चलो. What do you understand by moral integrity, sorry, professional efficiency in the context of corporate governance in India? Similar kind of example. You got another 2 minutes. Okay. Right introduction.
इट्स फॉर 3 10 45 10 पे ओवर कर देना। चलो डन। Okay, so any recent event you were able to connect with? Any recent event? Yes, Shraddha. So doing EIA assessments before starting their work or developing any projects. Like? EIA, Environment Impact Okay, Assessment. okay. Fair enough. Agreed. So may I give an example? यार आपका वॉइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया हुआ है। मीमांसा है करेक्ट। शूट इट अप। सर एग्जाम्पल इज कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ने मतलब अपने जो एम्प्लॉयज है काफी संख्या में ले ऑफ कर दिए थे, बट टाटा ने नहीं किए थे शायद। एग्जाम्पल गुड गुड गुड। Zomato green fleet, I too agree. So you got what kind of the recent things. Now what is the context if I ask you the context? Anyone? Now no recent events, context. Context. सर मे श्रद्धा बी बोलना है? सर एक मिनट। हाँ श्रद्धा देन प्रसून। सर मे बी हेलो अच्छा सॉरी सॉरी सर। श्रद्धा देन प्रसून। श्रद्धा। Sir, corporate social responsibility. गुड ठीक है। ओके प्रसून। सर मेक इन इंडिया या हेलो फिर स्टार्टअप इंडिया। ओके मेक इट इंडिया या स्टार्टअप इंडिया। मैं इसमें थोड़ा सा इंटीग्रिटी वाली साइड पे अभी मतलब इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। यस समवन बैड लोन्स के बारे में लिख सकते हैं सर। यार एक कंपनी तो तुम हैंड रेस करके बोलोगे अगली बार से, ठीक है? इनके ओके कैमरे सर। ऑन है, बेचारे ऐसे ही करते हैं। तुम कैमरा भी बंद है, मुझे चैट बॉक्स में देखना पड़ता है किसका वो है, ठीक है? मतलब एटलीस्ट यू जूम जूम हैंड रेस फीचर है, ठीक है? बैड लोन्स आई विल से नेगेटिव साइड पे एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? ओके तुषार। reducing carbon footprint maybe. गुड गुड। किसी को एसडीजी वगैरह कुछ नहीं याद आ रहा प्लीज? जस्ट नहीं कोई एसडीजी किसी को कुछ नहीं याद आ रहा जो इसमें फिट होता हो? Life on planet.
पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई एसडीजी है क्या ऐसा कुछ? तो उसमें प्राइवेट अलाउड है क्या? मतलब पार्टनरशिप किसके साथ करेंगे? गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट, सबके साथ में दैट कैन बी यूटिलाइज्ड. Context can be different. Okay, so it's not about the context which is quite visible, it can be invisible as well. Any recent Supreme Court judgment, our commercial trade bodies are there, that can be utilized. I'm just giving you different dimensions how you can think of. Context is something which gives the background of the question. That moral integrity and professional efficiency both are required for the corporate governance. तुम इंटीग्रिटी के चक्कर में प्रॉफिट ही नहीं दे रहे तो वो भी कोई फायदा नहीं है. टैक्स नहीं दोगे तो काहे को कॉर्पोरेट हो तुम? वी वांट ह्यूज कॉर्पोरेट टैक्स. सब सिंपल. ठीक है, फेयर एनफ, गॉट माय पॉइंट? डन? सर मैं हाँ हाँ बोलो. सर ये जो मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी दोनों कंबाइन मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ यूज करिए तो इसमें हम वो जो हिंडनबर्ग में जो अडानी वाली रिपोर्ट रिलीज करी थी उसका एग्जांपल दे सकते हैं? वो बॉडी कहीं में आ बात सकता है जैसे. बॉडी में बात करेंगे ना. आज मैं बॉडी के ऊपर बात ही नहीं कर रहा. मैंने कहा कुछ बात की आप लोगों से आज. ओके आज मैं क्वेश्चन एंटरटेन नहीं कर रहा. डोंट वरी. My ओके. purpose was to make you understand these 3-4 points, and which is very much important. ठीक है, sorted. तो सर I मैं am done. या अब कुछ बचा है क्या इसमें? हाँ बोलो. सर गांधी जी के ट्रस्टीशिप मॉडल भी तो दे सकते हैं मतलब कंटेक्स्ट में. I'll say कि ठीक है, it can work. ये चीजें कंक्लूजन में रहती हैं तो ज्यादा मजा आता है. I'll tell you why in the end. मतलब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, but it सर can be. सेवन सिंस आ सकता है क्या? यार 7 सिंस कॉमर्स नेगेटिव विदाउट टोन पे. मोरालिटी. अरे वो मुझे भी पता तू क्या बोलना की चाह रहा है, लेकिन नेगेटिव टोन अच्छा. पे मैं क्यों स्टार्ट करूंगा? मतलब ठीक है, बट मैं नेगेटिव टोन अवॉइड कर रहा हूँ. मतलब तू बॉडी में ले आया इसको, कंक्लूजन में करके हम कुछ बैलेंस कर देंगे. बट इंट्रोडक्शन में मैं नेगेटिव टोन, मतलब मेरा पर्सनल बायस भी हो सकता है. तुम किसी टॉपर कॉपी में देखोगे कि मार्क्स मिल गए हैं, बट मेरा पर्सनल बायस आई विल नॉट अलाउ. ठीक है, और बहुत सॉलिड रीजन है. तुम्हें एक टॉपर गलती से दिख जाओगा. मेरे को कई लोग दिखे जो नहीं अच्छा कर पाए हैं, और ये चीज सुधरवाई है तो पूरा स्ट्रक्चर ही सुधर गया होगा आंसर. ठीक है, फाइन. चलो, तो विद दिस आई से bid adieu to the session as well. ठीक है, at the same time, now what from my side, the introductions that you have written right now, I want these obviously. ठीक है, तो पीडीएफ बना के भेज देना मुझको एक बार, सिर्फ इंट्रोडक्शंस का, जो भी हमने अभी 3 क्वेश्चंस किए हैं. पहले 2 क्वेश्चंस, पहले एक क्वेश्चन का मैंने 2 इंट्रोडक्शंस लिखवाए हैं, बाकी दोनों का एक एक. तो आई वांट एटलीस्ट 4 इंट्रोडक्शंस फ्रॉम योर साइड, अपार्ट फ्रॉम 8 होमवर्क. ओके, बिफोर आई मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन. एक तो वो कमांड वाला है, वो इससे अलग होमवर्क है, वो तो करके नहीं आओगे, नेक्स्ट सेशन में बर्बाद हो जाओगे. सी, मेरा पर्पस क्या होता है सेशंस का, दैट आई गिव सर्टेन directions that you have to follow. Once you follow the directions, you will be struggling on the certain points. Once you struggle there, I'll make sure that at the end of session you are out of it. So don't expect spoon feeding from my side. I'd never do. हर सेशन, कभी सेशन मिस हो जाए, इट्स ओके फाइन, मतलब ठीक है, होना नहीं चाहिए, बट हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लो. आई विल मेक श्योर विद माई टीम दैट विद इन 24 आवर्स वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास. ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास से. Then what I want from you guys, for this introduction part, I have only tackled ethics question. पीवाईक्यू से पढ़ना है वो तो मैंने पहले बता दिया था ना आप लोगों को, पीवाईक्यू देख के पढ़ना है. अब जो जो पीवाईक्यू तुमने पढ़ लिए हैं, मतलब उतना टारगेट, 3-4 टारगेट तुमने पूरे कर लिए आई गेस, है ना? तो उसके बाद there is a certain issues that you are facing. तो आई विल से जो पीवाईक्यूज तुमने पढ़ लिया, मतलब जितना सिलेबस किया है, कम से कम 5 पीवाईक्यूज के इंट्रोडक्शंस मुझे चाहिए. मतलब इफ पॉसिबल अगर एक ही पेपर में से कर लोगे तो ज्यादा बेटर है. और मेरे को जब भी भेजना तो क्वेश्चन लिख के भेज देना फॉर द टाइमिंग. मैं क्वेश्चन कहाँ ढूंढूंगा अगर तुमने सिर्फ इंट्रोडक्शन भेज दिए? ये तो 3 थे तो मैंने देख लिए. तो ऐसा करते हैं, इसको सॉर्टेड ही कर देते हैं. मैं कह रहा हूँ
ऑलमोस्ट तुम्हारा एथिक्स होने ही वाला है, यस, देखने दो एक बार मुझको। हाँ, ज्यादा कुछ बचा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऐसा करो 2022 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, मतलब 2022 एग्जामिनेशन के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शंस मुझे भेज देना आप लोग। ठीक है, एंड आई एम क्वाइट, आई विल से, vocal about my deadlines. So some of you have sent me answers, the voice notes, even the written answers after the deadline. I was not able to evaluate, and to be very honest, I will not be able to. ठीक है, तो the things that I am promising you, if you do the same things within the deadline, it's fine. So I'm giving you the deadline of tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow, 12 p.m. at max. Tomorrow थोड़ा सा मैं इसलिए मना कर दिया, रक्षाबंधन है, you guys should enjoy. ठीक है, तो आई डू अंडरस्टैंड, तो नहीं हो पाएगा, इधर उधर जाना आना हो सकता है, कोई ट्रैवल कर रहा है तो आई विल एंटरटेन रिक्वेस्ट कि हाँ उसको शाम तक भेज दो। मतलब 5 इंट्रोडक्शन के लिए तुम कहोगे 5 दिन दे दो, फिर मत पढ़ो फिर तुम मेरे से, कोई फायदा नहीं। ठीक है, सिंपल, डन, ओके। विद दिस सेशन इज ओवर फ्रॉम माय साइड। इफ यू गेट एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू जस्ट शूट इट अप वन बाय वन। यस, सर ये क्या क्या बताई आपने डेडलाइंस की, कल 12 है या p.m. परसों? परसों, डे आफ्टर टुमारो। और सर मुझे वो फीस के रिगार्डिंग बात करनी थी कि वो इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता हाँ हाँ, आप वहां पे हेमल मैम जो एंटरटेन कर रही है, आप उनसे बात कर लो एक बार, कोई इशू नहीं आएगा, शी इज क्वाइट नाइस पर्सन, मार्क माय वर्ड्स। तो, ठीक है, तो आपने बोला था किस पे बात करनी है, मतलब कहाँ? अरे जो इंक्वायरी चैनल है ना, तो वहां अच्छा, पे हेमल मैम मिल जाएंगे आपको, वो अपने आप देख लेंगे। ओके। ठीक है, ओके, यस, एनीवन एल्स? सर सर मेरे क्वेश्चंस को का वन बाय वन देखो, मैंने इसीलिए बोला हैंड रेस कर लो, या तो जूम हैंड रेस फीचर यूज करो, मच्छी मार्केट नहीं बनाएंगे। यस, हाँ मैं वंशा बोलो। सब ये जो आपने क्वेश्चंस की डेडलाइन दी है परसों इवनिंग तक प्लीज शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज कल हाँ रक्षाबंधन। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला मुझे बता दोगे तो मैं एंटरटेन कर लूंगा, मतलब परसों के बाद नहीं, मैंने इसे क्लियरली बोला। ठीक है, ओके सर, ओके। आपने एक 19 अगस्त के लिए जो लास्ट टारगेट दिया था, तो कल सेशन है या नहीं है, मतलब नहीं, कल उसके कोई जो से नहीं, डाउट्स का अगर जो भी आपके, आप नोट करके रखो, मैं बीच बीच में मेंटरशिप सेशन लेता हूँ जिसमें आई जस्ट टॉक विद यू गाइस, उसमें मैं कुछ एजेंडा लेके नहीं आता, तो उसमें मैं सारे डाउट्स एक साथ ही क्लियर कर दूंगा। वो डाउट रिजोल्यूशन सेशन का मेंटरशिप सेशन होता है, जिसमें बेसिकली मैं डांट लगाता हूँ, बेसिकली वो हफ्ते में एक बार होगा, डोंट यू वरी। ठीक है, अभी थोड़ा डिले हो सकता है कि 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए, बट सितंबर से इट विल बी ऑन, आई विल से फ्लो इन द फ्लो। ठीक है, हाँ श्रद्धा बोलिए। सर वो पेमेंट कैसे करना है, लाइक शुड आई आल्सो कांटेक्ट हेमल मैम? हाँ हाँ, वहीं से मतलब आईएएस मेंटर सर्कल वाली जो इंक्वायरी चैनल है ना, आप सब वहीं पे। ओके। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन, वो जो आपने डेडलाइन दिया था लास्ट क्वालिटी का, वो आईआर का तो मैं नहीं कर पाई, मींस 365। अभी उसी को फॉलो कर ले, कोई बात नहीं, अभी मैंने उसमें इसलिए डेडलाइन, मतलब तुम्हारा इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने करवा दिया था ताकि तुम लोग स्पीड अप कर लोगे, तो यू विल फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ द सेम। अभी उसी को कंटिन्यू, जब हो जाए तो मुझे बता दे, फिर मैं अगला दिन। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एथिक्स को वी हैव ऑलमोस्ट डन, आई गेस वहां पे तो है ना, तो एथिक्स वी आर क्वालिटी डन। एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, बहुत हेवी है, इट्स नॉट गेटिंग ओवर ओनली, सो क्या कर रही है ऐसा तो? बस बुक पढ़ रही हूँ और नोट्स पढ़ रही हूँ, और हर दिन आंसर राइटिंग कर रही हूँ, तो एक एक चैप्टर को लेकर अच्छा करती हूँ, हाँ, जैसे वो कवर। मैं आंसर राइटिंग अभी पॉलिटी की मत कर, छोड़ दे। ठीक है। अब आंसर राइटिंग जब मैं कराऊंगा तब कर लियो, अभी रीडिंग दे दे एक बार। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है, डन। हाँ तुषार। सर मैं अभी पॉल थ्योरी की एनसीईआरटी और ये एथिक्स के डेडलाइंस ही कंप्लीट करूँ ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं करूँ फिलहाल। हाँ अभी कुछ नहीं, अभी जो, ठीक है। देखो जो डेडलाइन है वो बेयर मिनिमम है, जो शूट अप कर जाता है तो मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, आई विल नॉट जस्ट, आई विल से, देखो कस्टमाइज टारगेट्स का मतलब यही होता है, इफ यू आर हाँ पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आई हैव टू डू जस्टिस विद द पीपल। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आई कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है। फाइन, ओके। हाँ गीतांजलि बोलो। सर मुझे वही पूछना था कि अभी मेरे मैट्रिक्स के नोट्स बना रही थी,
लेकिन वो नोट्स मत मैं बना, नहीं है नोट्स तो मत आप। बना, नोट्स मत बना, सिर्फ रीडिंग करनी है। अभी कोई नोट्स नहीं बनाओगे, आई विल कम अप विद द सेशन। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब तुम लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया ना, तो इतना याद रखना, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कुछ नहीं करना है। इट विल बी sheer वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब थोड़ा सा मेरे को भरोसा रखो, दैट्स ऑल आई विल से। कुछ मत करो, अभी सिर्फ रीडिंग करो, कुछ नहीं करना है। तुम्हें नोट्स मेकिंग एंड ऑल सब सिखा दूंगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है रीडिंग कर ले, टारगेट जल्दी कंप्लीट कर ले, कुछ और पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट्स मेकिंग मत कर प्लीज। अगर कोई भी नोट्स मेकिंग कर रहा है कहीं से भी, करंट अफेयर्स की नोट्स मेकिंग, बुक्स की नोट्स मेकिंग, कंसोलिडेशन, कोई कुछ नहीं करेंगे हम अभी। मैं प्रॉपर सेशन लूंगा हर एक चीज का बिफोर, अगर कुछ करना हो। आंसर राइटिंग स्टार्ट होने से पहले 5-6 सेशन ले रहा हूँ, कुछ रीजन होगा उसका। कोर्स नहीं चला रहा हूं मैं सिर्फ एक। मत करना, गीतांजलि सिर्फ पढ़ ले, अभी थोड़े दिन पढ़ ले, 15-20 दिन चुपचाप मेरी बात मान ले, 15-20 दिन, ज्यादा नहीं। यू विल गेट टू नो की हाउ आई वर्क। ठीक है, टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो। प्लानिंग वाला, स्ट्रेटेजी वाला सारा काम मेरे ऊपर छोड़ ठीक है सर। दो। डन। हाँ नवदीप बोलो। सर मैंने सर एक्चुअली सर आपका प्रोग्राम सर कल ही ज्वाइन किया है सर। तो एथिक्स सर। टारगेट 1 से शुरू कर दे, रीड कर, ट्राई टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल, और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। स्लो चलेगा। देख अभी मैं एक ना बहुत फ्रेंकली मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, अभी मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ। मैं सितंबर में फ्री हो गया ना, तुम लोग मेरा मेन बेंच होते हो, फिर बाकी सब मॉड्यूल्स आते रहेंगे, आएगा ऐसे आ रहा है, ये चल रहा चलता है। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, तब थोड़ा हम ज्यादा हो जाएगा। हाँ गिर जाए चला जा सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा स्पीड। ठीक है, और कुछ कुछ काम बताऊंगा, अभी नोट्स मेकिंग के लिए नहीं बोल रहा। अभी मैं तुम्हारी मेंटेलिटी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे स्टेटस समझ रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे थे, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब तुझे नहीं पता था, लेकिन ये बैच सबके लिए, जिसने ज्वाइन नहीं भी करना, इट स्टार्टेड वे बैक, आई विल से 8-10 दिन तो हो गए होंगे ना हम लोगों को स्टार्ट किए। ठीक है, मतलब 8-10 दिन से आई एम टेकिंग सेशंस एंड ऑल। तो जो वो होता है, अ मेंटर नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हेन। तो मेरे को 8-10-15 दिन लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार 1 महीने के आसपास लगता है टू अंडरस्टैंड कि किसको क्या खिलाना है। तुम लोगों के बाद मेरे को इस सेशन के बाद बैठना पड़ता है कि हाँ क्या है। अभी तो मेरा तुम लोगों से इतना इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं सिर्फ अगस्त तक थोड़ा अपने कमिटमेंट्स में बिजी हूँ। अगस्त के बाद फुल फोकस आ जाएगा, तो चीजें स्पीड अप हो जाएंगे। अभी सिर्फ रीड इट आउट, टारगेट 1 से शुरू कर, जितना हो सकता है कर ले। अगर ऐसा हो लगता है कि तुझे टारगेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मेरे से और मांग ले, वरना तो मैंने अभी बता ही दिया, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, आई आर, ये 5 मीन्स से 65 करानी करानी है। आंख बंद के करते रहो। ठीक है, तो उससे कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, क्लियर। तो अभी जैसे, और जैसे उसमें फ्लो में जो वीडियोस है ना, उसको 2x पे देख लियो चैनल पे, इसीलिए मैंने शेयर किया वो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में मैंने मतलब सिर्फ बकवास कर दिया, कुछ कर दिया। दे आर टू यूजफुल। ठीक है ठीक है, सर। डन। हाँ कंटिन्यूएशन में एक और बात पूछना था सर। जैसे कि सर अभी मेरे मेरे मतलब सर मैं क्या टारगेट सेट करूं कि एथिक्स कब तक कंप्लीट करना चाहिए सर मतलब। अच्छा, आ, देख मैं तुझे, और मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, बाकियों के लिए भी कभी तुम टारगेट मिस करते हो, ठीक है, या लेट शुरू हो रहा है तुम्हारा जैसे। ठीक है, ऐसे केस में क्या है, जो ना मतलब टारगेट पोस्टिंग डेट देखो, मान लो मैंने 1 अगस्त को पोस्ट किया, 8 अगस्त को खत्म किया, तो दैट इज द मैक्सिमम टाइम आई से। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उसमें -1 और 2 डेज कर लो। मतलब एक, अगर बच्चा कोई स्ट्रगल कर रहा है और वो कंप्लीट करना चाहता है, तो -1 डेज कर लो, एटलीस्ट -1 डे। मैं एक दिन का तो देता हूँ। और जैसे जैसे देखोगे ना, ये श्रिंक कर देता हूँ। मतलब अब जो बैच 2 लाऊंगा, क्यूरियोसिटी का बैच 2 लाऊंगा, उसमें ये चीजें श्रिंक कर दूंगा। मैं भी उनको कंटेंट मैनेजमेंट के साथ साथ कह दूंगा, पढ़ो तो क्लासेस के साथ, तुम्हारे लिए वो रिवीजन होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हें सितंबर में GS4 पूरा कंप्लीट होगा तुम्हारा। अक्टूबर में, नवंबर में 2-3 निपटा दूंगा। मेरा पर्पज ये है। 1 का मैं थोड़ा लाइट रखता हूँ कि प्रीलिम्स में वैसे ही आता है सारा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। ठीक है, सॉर्टेड। तो थैंक यू सर। उसको अपने टारगेट का देख लो, बेयर मिनिमम उतना रखना। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ नंदी बोलो। जो अभी आप टारगेट दे रहे थे, मैं वो ऐसे कर रही थी कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ रही थी, साथ में एथिक्स पढ़ रही थी, और ऑप्शनल तो ऐसे करूँ या सिर्फ एथिक्स ही करूँ?
बहुत ज्यादा सही रहेगा। देख, अगर मेरे डेडलाइंस के साथ तू कुछ एक्स्ट्रा चलाना चाहती है तो चला ले, क्योंकि होगा क्या, जैसे एग्रीकल्चर पढ़ लिया तूने, जब मैं एग्रीकल्चर का टारगेट दूंगा तेरा हुआ रहेगा, हाँ तो हाँ दो चीजें होंगी, या तो रिवाइज कर लेगी या कहीं और फोकस कर लेंगे देख के हाँ तेरा। हाँ। ठीक है, जो भी तुम अपने साइड से करो वो एक अलग नोट्स में जरूर रख लेना। ठीक है, और मैं जब भी पूछूं कि अपने हिसाब से क्या कर रखा है वो कर लूँ। ठीक है, अगर तुझे ये लगता है नहीं मेरे से ही पूछना है कि क्या करना है, तो मैंने तो तुझे ये बोला है कि मतलब मैगजीन्स निपटा ले, क्योंकि मैगजीन्स निपटाने के बाद थोड़ा आंसर राइटिंग इजी हो जाता है। ओके सर। ठीक है, डन। ओके, एनीवन एल्स? यस सर। सो मेरे को पूछना था, मान लो कि हमने टेस्ट सीरीज मान लो कहीं और ज्वाइन करा है और वो मतलब वो हाँ चेक करके दे देंगे, तो आप क्या उसको रिव्यू कर दोगे? यार, नॉट द चेक। टोटली मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, टोटली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब मेरे अपने क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मतलब जो मैंने दे रखे हैं, ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है कि सबके वही करने हैं। ठीक है, बट हाँ ये है कि एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। देखो देयर हाँ इज अ मतलब वही डिफरेंस ओवरव्यू। बिटवीन, हाँ देखो देयर इज अ डिफरेंस, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मेरे को शायद पता भी नहीं होता मैं क्या क्या करता हूँ बैच में। एक होता है इवेल्युएशन, मैं कभी नहीं करता, पहले क्वेश्चन का इवेल्युएशन मैं करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वट एवर यू विल राइट व्हेन आई विल से, वो मैं इवेलुएट करूंगा, चाहे तुम 2 लाइन लिखो 4 लाइन लिखो, एंड आई विल गिव अ कॉल बैक टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एज। पहले क्वेश्चन, पहले 2-3 क्वेश्चन जो भी रहते देख के, ठीक है, वो इवेलुएट भी मैं करता हूँ, ऐसा है। ठीक है, उसके बाद आता है आई विल से रिव्यू। रिव्यू क्या होता है, इवेल्युएटेड कॉपीज पे रेगुलर बेसिस को देखना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब तुम लोग मेरे साथ कुछ लिखोगे, जितने मतलब क्वेश्चंस मैं इवेल्युएट करूँ, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ तुम्हारे पास है, वो मेरे पास भी आ रहे हैं। कई बार मतलब मेरे से स्किप हो गए तो मैं खुद बोल देता हूँ, यार नवदीप अपनी कॉपीज भेज दे मुझको जो लास्ट लिखे, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ। मैं बहुत इंफॉर्मल चलता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, कई बार मेरे से मिस हो जाता है, मेरे को भेजेंगे टीम वाले, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ बच्चे से दोबारा मंगा लो, शांति रहेगी जीवन में। टीम वाले गाली देंगे, सच्चा बच्चा गाली दे। ठीक है, सिंपल। तो दैट इज व्हाट आई डू। वो मैं प्रॉपर देखता हूँ कि हाँ इस वीक में इसने ये किया है, लास्ट वीक में ये इसको इनपुट्स गए थे इवेल्युएटर की साइड से, या मैंने इसको ये बताया था। कई बार मैं वॉइस नोट भी छोड़ देता हूँ जब मैं रिव्यू कर लेता हूँ अपनी साइड से। ठीक है, तो आई डू। ओवर रिव्यू जो आता है, ऊपर ऊपर से नजर मारना। ठीक है, उसमें मैं आपके लास्ट टेस्ट का क्या था या नेक्स्ट टेस्ट में क्या है उतना मैं नोट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब ये जरूर बता दूंगा कि हाँ इसमें ये चला ये नहीं चला, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना। दैट इज फॉर श्योर। ओके सर। एंड सेम विद द पीवाईक्यूज, अगर बच्चा खुद से पीवाईक्यू लिख रहा है मतलब टॉपिक का, उसका क्या यार सीन देख, रहेगा? अब मैं वही बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट टू टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है। जी ठीक है, अगर टाइम हुआ तो मैं कर दूंगा, मैं मतलब ये मेरी कमिटमेंट नहीं है, मतलब जी। आर यू गेटिंग इट। मैं इसे या कमिट नहीं कर सकता, बट मैं फॉर मना भी नहीं श्योर। करूंगा। ओके। ठीक है, जब तुम लोग मेरे साथ हो तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम्म कि दिसंबर में भाई आंसर लिखो तो ऐसा दिखना चाहिए कि क्या लिख दिया है। सिंपल, हम्म ठीक वो है। वाली ओके। चीज। ओके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? सर इथिक्स में जैसे आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का थोड़ा भूलते जा रहे, तो वो कैसे मैनेज करें? वो भूलोगे ही जब तक आंसर राइटिंग सही नहीं करेंगे उसको। अभी तुम रीड करो, इसीलिए मैंने नोट्स बनाने को भी मना किया। कंसोलिडेशन, रिकॉल, रिवीजन, सबका तरीका बता दूं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यस, एनीवन एल्स? डन डन। ठीक है, सर दैट्स ऑल सर फ्रॉम माय। हाँ, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, मुझे कुछ बात करना है पर्सनल बात, एंड ऑफ द सेशन। क्या क्या क्या? एंड ऑफ द सेशन बात करना है सर आपसे, मतलब। ठीक है, एंड ऑफ द सेशन में बात करना है आपसे, ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आपके अलावा बाकी चले जाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई थैंक क्वेश्चन यू तो नहीं सर। है? चलो देन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अपना पीडीएफ जरूर भेज देना, अभी चाहिए ये मुझे जो अभी लिखा है, बाद में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और रक्षाबंधन वाला गर्ल्स का अलाउ कर सकता हूँ मैं, लड़कों को कोई काम नहीं होता। परसों 12 बजे तक भेज देना तुम लोग, सिंपल। ठीक है, हाँ तो हंसो मत, सही बात है, तुमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बेरोजगार हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। ओके, जस्ट Recording in progress. सर ये पीडीएफ आपके पर्सनल वाले आईडी पे एक भेजना है? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
हाँ पर्सनल पे भेजना है यार सब, ठीक है। ओके डन।